Yes, good morning, students. Good morning, may I audible? Yes, ma'am. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. Yes. In the last lecture, we have started the database connectivity. Okay. What is database? What is used to connect our application with the database in the Microsoft Visual Studio. ADO.NET is used. Okay. What is ADO.NET? How to connect with the architecture of ADO.NET. Okay, all these topics we have covered. Okay, which are the classes? Yes, which are the classes that we have to use for connecting our application with the database? Which are the classes? Yes, we will tell. Connection class, command class. Okay, reader class, all are the classes that we have to use, okay, for connecting our database with the applications. Okay, there are two architecture. Okay, the connected architecture, the second is disconnected architecture. Okay, what is the meaning of connected architecture? Connected architecture matlab kya? The connection of our application with the database will remain whole time. Okay, and disconnected matlab kya? The connection है that will not be whole time. Okay, we will uh, collect our data into some variable called data set, and then whatever data we want, okay, we perform on the data set. So that is the connected and disconnected. Okay, in the last lecture we have seen that. Okay, so which are the steps to retrieve the data, okay, from the database to the application? The first of all, you have to create the SQL connection. Okay, connection class you have to use. Then handle the exception, you can write the try catch. Okay, open the connection, write the command, SQL command. Okay, select command to retrieve the data from the database. We require the select command. Okay, so write the select command, execute that command using execute reader method of the command class. Okay, which class? Command class. Then SQL data reader. Okay, you have to write the SQL data reader. Okay, close the connection and display the data. Okay, so this we have already done in the last lecture. Okay, this is the grid view. We are displaying our data into the grid view control. Okay, this is the grid view control. कौन सा control है ये? Grid view control. Okay, and roll number, name, and address. In this video control, we had displayed the data from the this table. Which table? Student table. How to take database. Okay, how to create table in the database, and how to add data in the database directly. That we have already covered. Okay, and how to display the data from this table into the web page. This is our web page. ASPX is a web page. Okay, web applications web page. Okay, .aspx मतलब web page. This is our web page. This is our control, grid view control. You can see here grid view control. Okay, and we bind our data into this control. Okay, we have bind our data, student data into this control. Okay, that we already learned. But कैसे हमने किया था? Using the कनेक्टेड आर्किटेक्चर. ठीक है, हमने क्या यूज किया था? कनेक्टेड आर्किटेक्चर. ओके, मतलब होल टाइम में जो कनेक्शन स्ट्रिंग वी हैव पास ना, दैट इज कनेक्टेड विद द डेटाबेस. ओके, then connection open. We have written the SQL star select command. Okay, then हमने उसका execute करवाया डेटा grid view के साथ. जो कंट्रोल है जिसमें हमको डिस्प्ले करवानी, in that control we have bind our data. We have to write data source method and data bind method of the grid view control. Okay, all these things we have done. I have repeated 2 to 3 times. Okay, now today same. Okay, same program we will do. मतलब same thing we have to do. Okay, grid view है उसमें हमको data display करवाना using the data set method. Which method? Data set. Okay, data set is used for disconnected architecture. Okay, same जो हमने इसमें किया है, roll number, name and address display हो रहा है from the student table. Okay, same thing we have to do but using the now data set. किससे करना है हमको? data set से करवाना है. We see data display using data set. Okay, ये हमने start किया था in the last lecture, but हमारा ये बाकी था. Now today we will do the same thing. Which thing? We will retrieve the data from the database. Okay, this is our database one. This is our database. In this database we have created one table, student table. In that student table we have taken 3 columns. Okay, ये columns में जो हमने data डाला है ना, there are data. See how to show table data. कैसे देखना है उसको, right click करना है and show table data. Okay. Wait.
ओके तो वी हैव एंटर 4 डेटा ओके तो ये जो डेटा है आईडी नेम एंड एड्रेस ओके दैट वी वांट टू डिस्प्ले in grid view control ठीक है इसमें this is a grid view control the grid view control is available in the toolbox okay under the data type ओके ग्रिड व्यू कंट्रोल ये ग्रिड व्यू कंट्रोल में हमको डेटा डिस्प्ले करवाना है ओके बट कैसे करवाना है यूजिंग डेटा सेट ओके यूजिंग डेटा सेट तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंट्रोल हम लोग लेंगे ग्रिड व्यू ओके दैट कंट्रोल वी हैव टू सेट सम प्रॉपर्टीज उसका हमको सेट करना है ओके वी हैव टू एडिट द कॉलम्स व्हाई बिकॉज वी वांट टू डिस्प्ले टेबल्स डेटा इनटू द ग्रिड व्यू कंट्रोल में हमको डिस्प्ले करवाते हैं दिस इज कंट्रोल तो हम लोग क्या करेंगे वी विल सेट द बाउंड कंट्रोल ओके व्हाई बिकॉज डेटाबेस का जो डेटा है क्योंकि इन डेटाबेस सॉरी टेबल का स्टूडेंट इज अ टेबल तो स्टूडेंट टेबल का जितना कॉलम्स है उसको हमको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा इन दिस कंट्रोल्स में ओके सो वी हैव टू सेट द बाउंड फील्ड so there are 3 columns in our student table okay we want to display 3 columns into the grid view so we have to take 3 bound field okay first I will take first bound field and set the header text property here I will write the roll number okay स्टूडेंट को जो डिस्प्ले यूजर को जो डिस्प्ले करवाना है दैट इज राइट इनटू हेडर टेक्स्ट एंड द सेकंड प्रॉपर्टी इज डेटा फील्ड जो टेबल में है ओके तो टेबल में हमने कैसे दिया है आईडी वी हैव टेकन ओके सेकंड फॉर द नेम ओके नेम तो टेबल में हमने कैसे लिखा है डेटा फील्ड मतलब टेबल में कैसे लिखा है स्मॉल so here we have to write name and address okay ये शो होगा हेडर टेक्स्ट मतलब ग्रिड व्यू में हेडर शो होगा ओके बट उसको बाइंड करवाना है ग्रिड व्यू को तो वी हैव टू सेट डेटा फील्ड प्रॉपर्टी जो टेबल में दिया है तो टेबल में AWDR वी हैव टू we have written so here I have to write AWDR okay निकाल दिया मैंने okay now ठीक है see ये ग्रिड व्यू हमने सेट कर दिया now अभी इसको हमको क्या करना है we have to retrieve the data from the table into the this grid view control so we have to write code so we will write the code into the CS page यहाँ पे हम लोग लिखेंगे .cs कोडिंग फाइल में हम लोग लिखेंगे ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ऐड नेम स्पेस ठीक है ये मैंने आपको बोला था नेम स्पेस व्हिच हेडर फाइल वी हैव टू ऐड यूजिंग system dot data dot SQL client okay if you will not add this file then you cannot use the SQL connection classes okay so SQL के जो classes we are using the SQL database that is inbuilt in Microsoft Visual Studio we are using that database तो वो अगर हम if we will not write this header file so we cannot use the command class reader class connection class okay and now we are doing this program using the data set so we have to define one more header file that is data only data okay using system.data for the data set ke liye okay now first of all what we have to do here we will write the code in page load event why because जब पेज रन होगा तब डेटाबेस में से डेटा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए तो सो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग द कोड इनटू द पेज लोड कहाँ पे लिखूँ मैं कौन से इवेंट में पेज लोड अगर आपको बटन पे क्लिक करने से डिस्प्ले होना चाहिए then you will take the one button and write the same code in the buttons click event बट अभी हमको जब पेज रन होगा तब करवाना है तो मैं यहाँ पे पेज लोड इवेंट में जस्ट कोडिंग लिख रही हूँ ओके नाउ हियर फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू सेट द कनेक्शन ओके तो कनेक्शन के लिए वी हैव द SQL connection class okay SQL connection is a class we have already done the theory then make the one object okay cn I am making the new object cn new SQL connection and pass the connection string here okay अभी इसमें हमको connection string pass करना है which connection string जो हमारा database है उसका connection string we have to pass okay so how to select the connection string कैसे लेना है कौन बताएगा मुझे who will tell yes fast student उसके बाद inserting का देखना है मुझे yes चल बताओ how to take the database का जो connection string है ठीक है वो database का path कैसे लेना है how to retrieve किसी को याद है तो कनेक्शन स्ट्रिंग हमको यहाँ पे पास करना है वी हैव टू पास द कनेक्शन स्ट्रिंग हियर एंड हाउ टू रिट्राइव द कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे रिट्राइव करोगे तो सिंपल एक SQL डेटा सोर्स करके वन कंट्रोल है ओके उसको ले लो क्लिक configure data source select your database okay and you will get the connection string just ले लो कैंसिल कर दो इसको डिलीट कर दो ना इसका हमको जरूरत नहीं है मैंने डिलीट कर दिया जस्ट कनेक्शन स्ट्रिंग के लिए मैंने लिया था
Okay, now this is my connection string. Okay, see the connection string जो ये connection है, you can see here data source, ठीक है, local data अभी हमने create किया है, MySQL है, ठीक है, उसका file name कहाँ पे store है, whole path is shown to you. Okay, यहाँ पे some error आ रहा है, तो just you have to add one more backslash. Okay, integrity security true. So this is our SQL connection. तो ये first step we have completed. सबसे पहले जब भी we want to connect our database with our application, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, SQL connection class का object you have to create. Okay, and object create करके you have to pass the connection string. How to pass connection string? Now you know. Okay, तो इतना ये steps same है for both, कि permanent connected के लिए भी disconnected के लिए these steps are same. Okay, now what we have to do, connection open करना है. Okay, write the command SQL command, जो भी आपको command लिखना है, write the SQL command. Okay, so open the connection. Our object of connection is cn dot open. Okay, I have opened the connection. Okay, now write the SQL command. So for writing the SQL command, we have to use SQL command class. Okay, create the object, whatever object we have to you want to create, just create the object. CMD I have created here. Okay, new SQL command and write the command. Okay, which command? Select star from table name. क्या है हमारा टेबल का नेम? What is our table name? STUDENT. Okay, star लिखा तो सब ID, name, address सब display हो जाएगा. Okay, if you want to display particular data, then you can write the column names. Okay, then pass the connection string. This is a syntax. Okay, here you can see the syntax. अगर आपको याद नहीं आ रहा तो you can see the syntax. देखो यहाँ पे है, what is syntax of SQL command, तो यहाँ पे दिया हुआ है command text comma करके SQL connection. तो connection जो database के साथ हमने connect किया है, जो डेटाबेस के साथ कनेक्ट किया उसका नेम हमको यहाँ पे पास करना है. ठीक है, डेटाबेस के साथ जो कनेक्ट किया उसका पाथ वी हैव गिवन इन दिस, वी हैव स्टोर इनटू द cn ऑब्जेक्ट. तो यू हैव टू राइट हियर cn. अब नाउ अब if you will search on the net ना, तो there are different ways to do this coding. Okay, तो लोग कभी कभी क्या करते हैं, लोग डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग यहाँ पे भी पास करता है. ठीक है, तो मीनिंग तो सेम ही है. हियर वी हैव टू पास द कनेक्शन स्ट्रिंग. तो हमने क्या किया है, कनेक्शन स्ट्रिंग को एक वी हैव स्टोर्ड इन वन ऑब्जेक्ट में स्टोर कर दिया, देन वी हैव पासिंग राइटिंग द नेम ऑफ द कनेक्शन हियर. कोई कोई डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग भी पास करता है. ओके, तो वो थिंग्स आर सेम, बट कंसेप्ट तो यही है कि कनेक्शन स्ट्रिंग लिखो, ओपन द कनेक्शन. ओके, राइट द कमांड्स. ओके, तो ये हमने कंप्लीट कर दिया. नाउ वी वांट टू यूज डेटा सेट. व्हाट इज द यूज ऑफ डेटा सेट? डेटा सेट का यूज क्या है कि हम लोग डायरेक्टली डेटाबेस के साथ परमानेंट कनेक्शन कनेक्टेड नहीं रहेंगे. फॉर एग्जांपल इन अवर सिस्टम देयर इज वन डेटाबेस एंड अभी तो एक ही टेबल है, बट सपोज देयर आर मल्टीपल टेबल्स पॉसिबिलिटी है, तो एवरी टाइम हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्टेड होने की इंस्टेड ऑफ दैट व्हाट वी विल डू कि हम लोग एक डेटा सेट क्रिएट करेंगे एंड वो डेटा सेट में जितना टेबल्स चाहिए हमको, वो टेबल्स वी विल स्टोर इन दी डेटा सेट एंड वो डेटाबेस के साथ हम लोग क्या करेंगे, कनेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो डेटा सेट मतलब डिस्कनेक्टेड डेटा. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेटा सेट? डिस्कनेक्टेड डेटा. So how to create data set? Here you have to write create the object of data set like this. Data set. Okay, ds is object equals to new data set. This is the syntax for creating object of data set. Okay, तो आपको data set create करना है. Okay, and one more thing is that when you will use data set, so you have to use SQL data adapter. आपको क्या यूज करना है? SQL data adapter. Okay, why? Because data set को database के साथ connect कौन करेगा? Data adapter. We will connect your data set with the database SQL data adapter. So you have to use the data adapter. क्या हुआ शाहजाद? CAN कहाँ पे CAN है? क्या पूछा आपने? मैम CN है ना ओपन, वहाँ पे CN डॉट ओपन. ओके, कनेक्शन ओपन. हाँ हाँ, कनेक्शन ओपन किया ना मैंने यहाँ पे. ओपन किया कनेक्शन. ओके, यस यस. तो फर्स्ट पहले हमको डेटा सेट क्रिएट करना है. वो डेटा सेट को हम लोग डेटाबेस के साथ कनेक्ट करेंगे यूजिंग द SQL एडेप्टर. तो हमको डेटा सेट का ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है एंड वी हैव टू क्रिएट द SQL डेटा एडेप्टर. ओके, तो क्या किया? देखो, SQL डेटा एडेप्टर का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड इन दैट SQL डेटा एडेप्टर वी हैव द पास CMD. क्या पास किया है? CMD. व्हाट इज CMD? CMD हमारा क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल. मतलब टेबल का जो डेटा है वो किस में है? CMD में.
एसक्यूएल डेटा एडेप्टर में हमने अभी क्या स्टोर कर दिया, कमांड CMD, जिसमें हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग मतलब टेबल का डेटा है, जो भी टेबल का डेटा है वो अभी कहाँ पे है, एसक्यूएल डेटा एडेप्टर में हमने एडी में स्टोर कर दिया। नाउ अभी हम लोग डेटा सेट को फिल करेंगे। ओके, तो एडेप्टर का आपको फिल मेथड यूज करना है। एडेप्टर का कौन सा मेथड यूज करना है, फिल मेथड। व्हाई, फॉर स्टोरिंग द डेटा इन डेटा सेट। तो व्हाट इज DS? DS इज अवर डेटा सेट, DS इज अवर डेटा सेट। क्लियर? तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है बट यू हैव टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ठीक है, आपको ये समझना है कि ये सब चीजें क्यों हम लोग कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स, तो ही कनेक्टिविटी होगा। ओके, तो डेटा सेट में डेटा हमको लाना है, वी हैव टू फिल अवर डेटा सेट। तो हाउ टू फिल डेटा सेट, यूजिंग द फिल मेथड। किसका फिल मेथड, एडेप्टर का फिल मेथड। एंड व्हाई वी यूज एडेप्टर, एडेप्टर इज यूज्ड टू कनेक्ट अवर डेटा सेट विद द डेटाबेस। ओके, तो ये थ्री थिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट। ओके, यस, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ डेटा सेट। ओके, डेटा सेट DS इक्वल्स टू न्यू डेटा सेट, create the object of SQL data adapter, SQL data adapter, any object you can create। ठीक है, अगर मैं ADP लिख रही हूँ तो भी चलेगा, AD लिखूंगी तो भी चलेगा, नो इश्यू। ठीक है, SQL data adapter। ओके, एंड क्या पास करेंगे हम लोग इसमें, CMD। व्हाई, बिकॉज CMD में क्या है, हमारा कमांड जो टेबल के साथ हमको काम करना है ना, उनका इंफॉर्मेशन कहाँ पे है, CMD में। सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, सी सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट, वो कहाँ पे है, CMD में। SQL डेटा एडिटर में अभी क्या स्टोरेज, CMD। नाउ वी वांट टू फिल, अभी डेटा सेट हमारा खाली है, DS डेटा सेट खाली। व्हाट इज डेटा सेट, डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द टेबल्स। व्हाट इज डेटा सेट, डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ द टेबल्स। बट कभी होगा वो कलेक्शन ऑफ टेबल्स, जब उसको हम लोग फिल करेंगे तभी ना। तो वी हैव टू फिल, तो हम लोग कैसे फिल करेंगे, डेटा एडेप्टर जो है इसका फिल मेथड से। ओके, दिस इज अ फिल मेथड। क्या फिल करेंगे अभी उसमें हम, किसको फिल करेंगे, डेटा सेट को। तो थोड़ा सिंटैक्स आपको याद रखना है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन, ये लाइन का मीनिंग क्या हो गया कि एडिटर का फिल मेथड जो है वो हमने कर दिया किसमें, डेटा सेट में। बट व्हाट इज ADP, ADP में हमारा क्या है, CMD। व्हाट इज CMD, CMD में हमारा क्या है कि जो टेबल पे हमको काम करना है वो टेबल का इंफॉर्मेशन, वो टेबल का डेटा। ओके, तो ऑल दिस थिंग्स आर कनेक्टेड स्टूडेंट्स, ऑल दिस थिंग्स आर कनेक्टेड, सो यू हैव टू फॉलो दिस स्टेप्स। ओके, अगर एक इसमें से एक भी स्टेप मिस कर गए तो आपका डेटा डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, CMD में व्हाट इज CN, तो यहाँ पे हमने ऊपर CN कनेक्शन दिया है। ओके, तो ये सारे स्टेप्स कनेक्टेड है, आप एक भी स्टेप्स मिस करोगे तो नहीं होगा। नाउ दिस इज, तो ये हमारा डेटा सेट क्या हो गया, मतलब डेटा सेट में हमारा टेबल आ गया। कौन सा टेबल, ये वाला, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, नाउ जो टेबल का डेटा हमने स्टोर कर दिया है डेटा सेट में, अभी वो डेटा सेट में से वी विल यूज द डेटा। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, ग्रिड व्यू में डेटा डिस्प्ले करवाना है। वी वांट टू डिस्प्ले डेटा इन ग्रिड व्यू। ओके, बट उससे पहले वी हैव टू डिस्प्ले दिस क्वेरी। ओके, कमांड एग्जीक्यूट करना है ना, तो ये आपको याद रखना है। तो कमांड एग्जीक्यूट नोन क्वेरी, पहले तो ये उसको एग्जीक्यूट करवा दो, जैसे हमने रीडर में करवाता है वैसा इससे हम लोग करवाएंगे। ओके, ये दिस इज अ कमांड, लिखने के बाद यू हैव टू डिस्प्ले द कमांड्स मेथड। ओके, कमांड लिखने के बाद यू हैव टू डिस्प्ले, आपको डिस्प्ले करवाना है एग्जीक्यूट नोन क्वेरी, उसका मेथड है एग्जीक्यूट नोन क्वेरी है, एग्जीक्यूट रीडर है। ठीक है, इन दिस पेज में हमने एग्जीक्यूट रीडर लिखा था। ओके, व्हाई, बिकॉज हमने कौन सा क्लास यूज किया, डेटा रीडर से हम लोग डेटा रिटर्न करवा रहे थे। ओके, एंड वी आर व्हेन वी आर रिट्राइविंग द डेटा यूजिंग डेटा रीडर, तो ऑलवेज फॉरवर्ड डेटा ही रीड होगा, मतलब रोल नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसे डेटा रीड होगा। ठीक है, बैक में डेटा नहीं जाएगा, रीड नहीं कर सकते। बट व्हेन यू आर यूजिंग द डेटा सेट यूज करो तो यू हैव टू यूज एग्जीक्यूट नोन क्वेरी मेथड ऑफ द कमांड क्लास, एंड आप जैसे चाहे वैसे डेटा यू कैन डिस्प्ले। ओके, तो ये डिफरेंस आपको, यू शुड रिमेंबर दिस डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एग्जीक्यूट नोन क्वेरी एंड एग्जीक्यूट रीडर। ओके, तो एग्जीक्यूट रीडर जब मेथड यूज करोगे तो आप ओनली यू कैन रीड द फॉरवर्ड डेटा फ्रॉम द टेबल। ओके, यहाँ पे सी डिफरेंस है, ये हम डेटा सेट से करें। ठीक है, तो व्हेन यू आर यूजिंग द डेटा सेट ना, तो आपको कमांड का कौन सा मेथड यूज करना है, एग्जीक्यूट नोन क्वेरी। एंड जब आप रीडर यूज कर रहे हो, रीडर थ्रू डेटा रिटर्न करवा रहे हो, तो आपको क्या यूज करना है, cmd.execute रीडर। ओके, सी नाउ अभी हम लोग क्या करेंगे, ग्रिड व्यू जो हमारा कंट्रोल हमने वेब पेज पे लिया है। ठीक है, ग्रिड व्यू 1 जो हमने कंट्रोल लिया ना, ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स। ठीक है, उसको हमको क्या करना है, डेटा डिस्प्ले करवाना है। कौन सा डेटा, जो डेटा सेट में है, जो डेटा सेट में है। ओके, हमने ऑलरेडी यहाँ डेटा सेट फिल करवा दिया।
तो डेटा सेट का डेटा कहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ग्रिड व्यू में। एंड नाउ ग्रिड व्यू को हम लोग क्या करेंगे, बाइंड। एंड नाउ क्लोज द कनेक्शन, cn dot close, cn dot close। तो नाउ ये हमारा क्या हो गया, डेटा सेट। नाउ अभी हम लोग देखते हैं कि हमारा जो टेबल का डेटा है, दैट डेटा डिस्प्ले इन दिस और नॉट। ओके, ये ग्रिड व्यू कंट्रोल है, उसको हमने लास्ट में बाइंड करवाया। सी कहाँ से डेटा आ रहा है, डेटा सेट में। व्हाट इज डेटा सेट, यू कैन सी हियर डेटा सेट सिलेक्ट स्टूडेंट। ओके, तो ग्रिड व्यू कंट्रोल में डेटा डिस्प्ले हो रहा है यूजिंग द डेटा सेट। नाउ आई एम रनिंग दिस पेज। ओके, सेव करती हूँ। डेटा डिस्प्ले यूजिंग डेटा सेट, ठीक है, ये इसमें डेटा डिस्प्ले होना चाहिए। नाउ सी, yes students, all these things you can do when you will do the practice at home. Okay, again and again you have to do practice। एक बार रन करोगे तो हो गया, ऐसे नहीं है, ठीक है। आपको उसको एवरी टाइम 2 to 3 टाइम्स आपको स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। सेम कोड लिख लिख के समझ के, यस कि मैं ये लाइन लिख रही हूँ तो क्या हो रहा है। ओके, विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट इज द आउटपुट। इसके बाद we will see how to insert data into the table from the web page। ठीक है, वेब पेज से डेटा कैसे इंसर्ट करना है वो हम लोग देखते हैं अभी। पहले ये देख लो। स्टेप्स यू हैव टू रीड। ओके, आपको जो स्टेप्स हैं वो रीड करना है रोज। एक बार तो रीड करो, एक बार समझ में आ गया देन कोई बात नहीं, फिर आप उसको खुद से कर सकते हो। And what is MCQ? Which type of MCQ I will ask? What is data set? Option B होगा fourth. Okay, which method we will use to fill data set? Okay, fill method we will use। Okay, adapter का कौन सा method हम लोग use करेंगे, fill method। What is adapter? Which are the classes, command classes, connection classes, reader classes। Okay, so all these things I will ask। आपको ऐसे preparation करना है complete for this subject। Yes, तरन्नुम का क्या network issue है? Wait। Yes, what is status of your project, students? कर रहे हो ना? Yes or no? प्रोजेक्ट कर रहे हो सब लोग स्टूडेंट्स? एंड मोमेंट पे फिर बहुत प्रॉब्लम होगा। प्लीज अभी से स्टार्ट कर, डिजाइनिंग तक यू शुड फिनिश इन दिस सेमेस्टर। डिजाइन तक फिनिश कर दो, थोड़ी ही बाकी रहेगा। स्टार्ट किया सब लोग डिजाइनिंग, हैव स्टार्टेड द डिजाइनिंग पार्ट? हाँ, यस और नो? इसके पास सिस्टम है वो लोग स्टार्ट किया। वेट, आई एम अगेन रनिंग। यस, ओके गुड। again I am starting up, मैं again रन कर रही हूँ। मैंने वो स्टॉप कर दिया, ज्यादा टाइम ले रहा था।
using dataset display.aspx, this is our web page. ठीक है, now see data display हो रहा है कि नहीं. After that we will do the insert command. ठीक है, आज हम लोग insert command भी करते हैं. Then next lecture में update and delete command. Okay, so you can use in your project also all these things. In your project the coding will be same, only your connection string will be changed. Okay, आपका जो connection string होगा आपके system में वो change होगा. बाकी जो steps connection string and table name, okay, table का name and connection string column name थोड़ा change होगा. बाकी जो steps जो है बाकी object create करना, adapter वगैरह, data set लेना, connection string लेना, all these steps will be same. Okay, सारा steps क्या होगा same होगा. only table name and database का connection जो है connection string वो change हो जाएगा. ओके, तो ये ROLLNO वैसे हमने लिखा था. कहाँ पे लिखा था? ग्रिड व्यू का जो एडिट कॉलम्स में हमने उसमें हेडर टेक्स्ट में ऐसे लिखा था. सो इट इज डिस्प्लेइंग लाइक दिस. ओके, देन नेम एड्रेस. ठीक है, ये हमने हेडर टेक्स्ट में लिखा था. एंड ये जो डेटा है वो कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है? फ्रॉम द टेबल. कहाँ से डिस्प्ले हो रहा है? फ्रॉम द टेबल्स. ओके, तो वी आर डिस्प्लेइंग द डेटा इनटू द वेब पेज. कहाँ पे डिस्प्ले करवाया? वेब पेज से. दिस इज द ASPX पेज. कहाँ से करवाया? फ्रॉम द डेटाबेस. कहाँ से करवाया? डेटाबेस में से हमने डिस्प्ले करवाया. ठीक है, हमने हमारा डेटा स्टोर कहाँ पे किया हुआ है? डेटाबेस में स्टोर किया है. डिस्प्ले कहाँ पे करवा रहे हैं? इन दी वेब पेज में. क्लियर? दिस इज क्लियर? दिस इज क्लियर? यस और नो? जल्दी से बताओ. अगर नहीं समझ में आता अगेन आई विल एक्सप्लेन. अदरवाइज फिर हम लोग इंसर्ट वाला देखते हैं सेम पेज पे. क्लियर? यस स्टूडेंट्स, यस और नो बोलने में क्या टाइम लगता है? हाँ, ओके. काय मैं चालू है. यस आस्तिक. हाँ आस्तिक म्यूट योरसेल्फ. ओके, ठीक है. नाउ अभी व्हाट वी हैव डन कि हमने डेटाबेस में से डेटा डिस्प्ले. यस शाहजाद, क्या हो गया? एनी डाउट? मैं घर पे कनेक्शन कर रहा था, डेटा से डेटा कनेक्शन कर रहा था, हो नहीं पा रहा. यस, क्या हो गया शाहजाद? मैं डेटा कनेक्शन कर रहा था, डेटा जो है इसको क्लोज कनेक्शन कर रहा था, हो नहीं पा रहा. सबकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. शाहजाद, टाइप इन द चैट बॉक्स. टेक्स्ट बॉक्स चैट बॉक्स में टाइप करो. मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है. चैट बॉक्स में टाइप करो. यस शाहजाद, यू टाइप इन चैट बॉक्स. ओके, यस. नाउ नेक्स्ट अभी हम क्या करेंगे? वी विल स्टोर. ठीक है, वी विल स्टोर डेटा इनटू डेटाबेस फ्रॉम द वेब पेज. ठीक है, ये वेब पेज पे से हम लोग अभी ये स्टूडेंट टेबल में डेटा हम लोग इंसर्ट करवाएंगे. वी विल इंसर्ट नाउ. ओके, तो आईडी है, नेम है, एड्रेस है. तो व्हाट वी विल डू हियर? वी विल डिजाइन एंटर रोल नंबर. ओके, एंटर रोल नंबर. ओके, वी विल सी. शाहजाद, कनेक्शन नहीं हो पा रहा है, स्टेप्स में कुछ तो मिस्टेक्स हो गए. वी विल सी. ओके, हम लोग देखते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं हम लोग आपका इश्यू. डोंट वरी, करते हैं हम लोग शाहजाद. ओके, पहले ये देख लो इंसर्ट कमांड वाला, फिर आपका सॉर्ट आउट करते हैं. ओके, तो टेक्स्ट बॉक्स ले लो. ठीक है, एंटर दी. नाउ व्हाट वी वांट टू डू, हमको क्या करना है? यूजर से वी वांट टू इंसर्ट दी डेटा. ओके, टू यू वेब पेज वी कैन इंसर्ट दी डेटा नाउ इनटू टेबल. कैसे? सी, टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैंने. ओके, ओके, एंटर रोल नंबर, एंटर नेम. ठीक है, तो नेम के लिए आई एम टेकिंग वन मोर टेक्स्ट बॉक्स. ओके, एंटर नेम, 3 fields है ना, एंड एंटर एड्रेस. ओके, ADDRESS. मैं ऑडिबल? स्टूडेंट्स हाँ मैं मैम. ऑडिबल?
ओके एकदम से क्या हो गया पता नहीं, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गया, मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी ना शायद, वेट एक मिनट। मैम स्क्रीन नहीं दिख रहा है। हाँ स्क्रीन नहीं नहीं वो पता नहीं, मैं शेयर करी वो स्टॉप हो गया था शेयरिंग। रिकॉर्डिंग भी स्टार्ट हुआ था। एक मिनट हाँ, ये स्क्रीन पे योर माइक्रोफोन स्पीकर आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, रिकॉर्डिंग विल नॉट इंक्लूड। एक मिनट स्टूडेंट प्लीज वेट वेट। प्लीज टेस्ट स्पीकर पे तो आ नहीं रहा है, वेट वेट हाँ। इश्यू ठीक है चलो शेयर। Yes, now you can see. Yes, दिख रहा है। Yes, student screen is visible. Yes, ma'am. यस मैम। Okay, okay, okay. चलो now एक बटन ले लिया मैंने, ठीक है। When we will click on this button ना, see क्या आ रहा है ये? Your microphones are not working properly. Recording will not. No other separate audio device to play. आवाज तो आ रही है ना मेरी, तो क्या हुआ है? Enable भी नहीं है ये तो। वीडियो तो है ही नहीं ऑडियो। बेटा कंटिन्यू रिकॉर्डिंग कर दूं, रिकॉर्डिंग विल नॉट इंक्लूड ऑडियो, बट नहीं ऑडियो आएगा तो हाउ यू कैन अंडरस्टैंड ना, ऑडियो तो चाहिए। ओके प्रॉपर्टीज, ओके इन प्रॉपर्टीज आई एम सेटिंग द टेक्स्ट प्रॉपर्टी बटन का इंसर्ट INSERT insert. Okay, now what we want to do, when I will enter roll number name address, तो insert बटन पे क्लिक करूँ तो ये सारा डेटा कहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए? स्टूडेंट टेबल में। कहाँ पे स्टोर हो जाना चाहिए? इन द स्टूडेंट टेबल। ओके तो उसके लिए we have to